is the story. It chronicles the life of this 20-something journalist जिनका नाम नूर रॉय चौधरी है, played by the lady जिनकी आप photos खींच रहे हैं अभी, Sonakshi Sinha. And now, ma'am, with your smile, Miss Noor Roy Chaudhary, Sonakshi Sinha. To now invite the producers of the film, Mr. Bhushan Kumar, Mr. Vikram Malhotra. So before we open the floor for questions from the media, there are a couple of things that I would like to ask. And the first question I'd like to ask is to the director, Mr. Sunil Sippy. So when you see a script on paper, right, for a director, the vision and everything matters. Obviously, you must have gotten excited, but what got you on board? Like, you were like, this is it. For me, I think it was the character of Noor. The way it was crafted, it was an everyday girl that represented the problems of anybody living at any time in modern times in our cities, you know? So for me, there was a lot of identification with her. And that was the germ of it. That was the basis of it. And then it just grew from there into how he dealt with the city of Mumbai, how he dealt with her friendships and things like that. But really, the core of it was the character. That's what drew me to it completely. Ma'am, how are you? You're beaming. Hi guys, thank you all for being here. First, you tell me, how did you like it? Huh? Thank you, and I'm so glad that you all could be here with us today. And I am just so overwhelmed right now because I connected to the character immediately when Sunil Sippy narrated it to me. I think before he reached down in my building, I called him and I told him I'm doing this film. And to see it now on the big screen, to see it come out like this, turn out like this, I think it's such a good feeling, and I'm so glad that I could share it with all these wonderful people over here. And it's just, I'm just too over. I need to do something. Can you hold it? Yeah. Okay, getting it all out. Clearly very excited. Let's come to this man. Your pretentious movie reviews online, जहाँ आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, they were a rage. And now you're a part of Hindi films. Yes, the irony. Sir, paradigm shift. Karan Gill. Check. Okay, sorry. The irony is not lost on me, I realize. But yeah, when Sunil came, everybody got in touch for the part that I'm playing of Saad in the film. And has he ever reviewed your films? तुम्हें break किसने दिया, Karan? Sonakshi really stuck her neck out for me. She was like, please take Karan, I think it'll be a good choice. And then she never let me forget it. She tells me every day, you have a role because I exist. So I'd like to thank Sonakshi for pushing for me. And I had a lot of fun doing the film, man. It was a crazy experience. Shivani, you've been on live TV, right? And now you're part of this absolutely wonderful cast. Kanan, Sonakshi, Manish, everyone. Must be really exciting to just be on set every day and now to see this brilliant product that is releasing on the 21st of April. It is. I mean, it was an absolute honor to be part of such an incredible team. Very different from live TV because with live TV, you get one take. I mean, it's kind of similar. They only let you do it once here as well. And then you move on. But the whole process was obviously a new experience for me. But I have to say that Sonakshi really held my hand through it. She was amazing. So did Sunil. So did Shikha. Everyone was incredible. They were wonderful people to work with, honestly. I mean, if this is what the movie business is like, and if this is what a team, a general team is like, then I'm in. Sign me up. And now we come to the gentleman who turns everything into gold, Mr. Bhushan Kumar. Bhushan ji. Sir, last year, Airlift. I think you are the Midas, like how we Indians say, or Midas. जो भी आप छूते हैं turns into gold. 11 films releasing this year. And आपने conscious effort जो है वो किया है कि content driven films जो हैं वही आप produce करेंगे. So Noor के लिए
क्या सोच थी डिसाइड किया आपने कि यस मैं तो ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद विक्रम? One was Sonakshi Sinha, that's why, and the other was the person standing next to me. I strongly believe in his content sense. जिस तरीके से इन्होंने मेरे को बेबी प्रपोज करी थी और हमने प्रोड्यूस करी थी साथ में, एंड देन एयरलिफ्ट, नाउ इट इज़ नूर. व्हेन आई हर्ड जस्ट वन लाइन ऑफ इट, तो इतनी रिलेटेबल फिल्म लगी, एंड especially for the journalists, means they can relate to it. So all these real cinemas these days are working. People wants to connect with the real kind of films, and जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, the people want to see that kind of movies. And now this one is blended with great music. Of course, you have seen the music की झलक आपने देखी है. So we are very excited at T-Series as a team to push this film to the till the release, and I guess everybody will love this film. विक्रम, भूषण जी said एक line में he was convinced. वो क्या line थी? What was the one line that you told Bhushan ji about Noor? क्या थी वो line? We should do this film together again. But you have a stupendous track record of the films that you have नजर मत produced. लगाओ यार. नहीं मैं नहीं लगा रहा हूँ सर. लेकिन नूर देख के भी ऐसा लग रहा है you've got a film on your hands which is going to garner a lot of accolades. क्या देखते हैं आप एक स्क्रिप्ट में when you decide कि हाँ I want to be a part of this and I'm going to produce it? वो sense मतलब. Firstly, Sonakshi thanked all of you for being here. Really appreciate the time that all of you take out. I know this commuting, carrying cameras, carrying your pads, phones, everything is a lot of effort. So thank you for coming out time and again for our films and supporting us. कोई secret formula नहीं है, Suren. What we look for in the stories that we back are the impact that they're going to create. उनकी एक relatability होनी चाहिए audience के साथ, younger audience के साथ, progressive audience के साथ. Bhushan ji touched about how people are now liking real stories, relatable stories. What we look for are storytellers like Sunil, talent like what is standing on the stage, people who understand and align themselves to the audience of today. And then when you go about that process, you have people like Shikha who work so strongly and passionately on our content that we don't rest till it gets perfect shape. So really कोई secret formula नहीं है. सब लोगों को फिल्म पसंद आए, that is the only thing we keep in mind. मैं पसंद नहीं आऊंगा अगर मैंने उनको सवाल पूछने के लिए अब इनवाइट नहीं किया. So members of the media, this is your turn now. Shoot. If you could just raise your hand, I could just pinpoint. सोनाक्षी, स्टोरी के लिए जो हर रोज हम लोग लड़ते हैं, उसका प्रेशर आपने कैसे महसूस किया और कितना मजा आया आपको? I told you ये होगा. ऑनेस्टली मैंने आप सबसे ही सीखा है. आपके साथ इतनी इंटरेक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में कि आई हैड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ दैट. एंड नूर एक्चुअली एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी जर्नलिस्ट है जो स्टोरीज उसे करनी है, वो उसे करने का मौका नहीं मिल रहा है और वो उसके लिए लड़ती है. तो उसे आप जैसे यहाँ आई हैं सोनाक्षी सिन्हा का इंटरव्यू लेने, उससे नहीं जाना फिल्म सिटी किसी का इंटरव्यू लेने. उसे जाना है, उसे रिपोर्ट करना है अबाउट द सुएज वर्कर्स की सैलरी और कितने लोग ट्रेन ट्रैक्स पे मर गए. तो असली स्टोरीज जो हमारे शहर के बारे में, द सिटी दैट शी रियली लव्स, मुंबई, उसके बारे में वो उसे रिपोर्ट करना है. तो वो एक स्ट्रगल उसका वहाँ पर जारी है. एंड ऑनेस्टली जितना मैंने अप्लाई किया है, मेरी जर्नलिज्म की जो नॉलेज है वो सब मुझे आप सबसे ही मिली है. तो थैंक यू फॉर बीइंग माय टीचर्स फॉर दिस फिल्म एंड इट रियली हेल्प्ड इंटरैक्टिंग विद ऑल यू गाइस. Sonakshi, did you meet anyone, like any journos just No, to get? I meet you all the time. I think no, actually I feel all the credit for the way that I portrayed Noor, मेरे director सुनील सिप्पी को जाता है. इन्होंने इतनी अच्छी तरह से वो कैरेक्टर को मुझे समझाया. हमारे राइटर्स को जाता है जिन्होंने इतने अच्छी तरह से ये कैरेक्टर को लिखा है कि आई रियली इट वाज जस्ट very clearly laid out to me, and I really didn't have to do much homework. So thank you guys for saving me in that department. And Sunil, why Sonakshi? Why did you have? Hey, why not? There was just nobody else for this. She was absolutely perfect. There was no question of anybody else. We didn't talk to anybody else. I just knew that she was absolutely perfect for it. There was just no doubt in my mind, and I'm really thrilled. And I mean, as an actor, I had everything on a plate for me. It was an absolute joy. It was a great decision from the team, from everybody. And yeah, just very happy.
यू लुकिंग ग्रेट, स्पेशली योर फेशियल एक्सप्रेशन जो है, वी लाइक इट एक्चुअली। पूछना है कि कभी ऐसे रियल ज़िंदगी में ऐसा हुआ जैसे कि फिल्म में कभी आपने बताया कोई स्टोरी फाइल करे और किसी के लिए वो डिस्टर्बिंग था, तो कभी ऐसे आपके लिए हुआ है कि समवन हैज रिटन समथिंग और शोड समथिंग व्हिच हैज रियली डिस्टर्ब्ड यू, यू वुड लाइक टू से समथिंग ऑन इट? मैं गिनती भूल गई हूँ कितनी बार ये हुआ है, बट आई थिंक इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन दैट वी आर इन। आई थिंक ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई थिंक यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल ऑफ इट, बट नथिंग सो सीरियस। एक यू नो टाइम आती है नूर की लाइफ में जहाँ पर शी रियलाइजेज दैट शी इज़ नॉट बिन रिस्पॉन्सिबल इनफ, और वो किस तरह से उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ दिस गर्ल। ये उसकी जर्नी है। इट्स ऑल फन एंड गेम्स एट स्टार्ट, इन द बिगिनिंग शी इज़ नॉट वेरी सीरियस, बट फिर कैसे वो अपने लाइफ को अपने हाथों में लेती है, एंड यू नो हाउ इट्स जस्ट हर जर्नी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। आई थिंक आप, मैं, हर कोई यहाँ पर हैज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम gone through that journey जहाँ पर you know we've had gone through a certain situation that has changed us, और I think that is very relatable। वो आप भी देख के शायद relate कर पाएंगे, and hopefully ऐसी stories नहीं लिखेंगे। जैसे भूषण जी ने कहा कि वेरी रियलिस्टिक है, एनीथिंग पर्टिकुलर लाइक यू ट्राइंग टू शो समथिंग जो रियली मैसेज भी एक पोर्ट्रे कर रहा है? बहुत एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, एंड आप, आई डोंट थिंक आई वांट टू रिवील मच ऑफ इट अभी, क्योंकि जितना आपने ट्रेलर में देखा है वो अभी के लिए काफ़ी है, बट धीरे धीरे जाके आपको पता चलेगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज द एक्चुअल सिचुएशन दैट नूर वाज गोइंग थ्रू, एंड इट इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल। One last thing, how is Mumbai for you actually? Mumbai is killing you actually. Mumbai is, I think for all of us, Mumbai is a city with which we are so connected to. I've been born and brought up over here. It's I would not think of being anywhere else. And there are certain things that happen in our city, not only our city, every city. Anybody who lives in Bangalore, who lives in Calcutta, who lives in Delhi, will have certain problems that they are not okay with, which is happening to their city. And everybody wants to make a difference. Noor is one of those people, and she loves her city, and that's why she wants to change it for the better. And that is what we're trying to show in the film. बहुत ही अलग है। आई थिंक हर फिल्म की स्टोरी लाइन अलग होती है, हर फिल्म जिस तरह से बनाया जाता है वो अलग होता है। वो फिल्मों की स्टोरी काफ़ी अलग थी, और इस फिल्म की स्टोरी अलग है। मैंने हर फिल्म में कोई ना कोई तो प्रोफेशन होता है जो रिपीट होता है, तो आई डोंट थिंक दैट्स इशू। फिल्म में आपने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है, और जो एक जर्नलिस्ट होता है वो हमेशा खबरों से उसे पता होता है कि क्या चल रहा होता है। देश में आजकल गुरमेहर कौर को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, और एक लड़की होने के नाते जब इस तरह की घटना होती हैं तो आप किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं? आई थिंक मैं आज यहाँ पर रिएक्ट नहीं करूँगी, जब वक्त समय ठीक होगा उस पर रिएक्ट करने के लिए तो मैं करूँगी। यहाँ पर आज हम नूर के लिए आए हैं, तो लेट्स जस्ट एक सवाल और, सोनाक्षी, क्या इस फिल्म के बाद फीमेल जर्नलिस्ट को लेकर आपका परसेप्शन चेंज हुआ है? मेरा परसेप्शन वही का वही है। आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल। आई थिंक एक जर्नलिस्ट होना आसान नहीं है, और स्पेशली आप लोग जैसे काम करते, मैंने आपको देखा है हर स्टोरी के लिए कैसे आप लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यॉल, एंड नूर इज ऑल्सो वन ऑफ यॉल, एंड you're going to really enjoy watching. फिल्म में आप जर्नलिस्ट बनी है, ऐसी एक चीज़, ऐसा कोई सीन है फिल्म में कि आप करते वक्त आपको लगा है जर्नलिस्ट ऐसे भी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ था? मुझे लगा है हाय इनको ये भी करना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपैथी जागी थी, एक एम्पैथी बनी थी, जहाँ पर यू ऑटोमेटिकली, हमें इतना तो नहीं पता होता कि व्हाट यू गाइस गो थ्रू, बट ऑनेस्टली ये रोल प्ले करते वक्त मुझे पता चला कि अच्छा इन्हें ये भी करना होता है। एक खास घटना ऐसा जो बता सकते हैं? खास घटना, आई थिंक जिस तरह से आप लोग आके इतने वक्त तक वेट करते हैं, वैसे एक छोटी झलकी आपने देख ली होगी ट्रेलर में। मुझे भी सनी लियोनी के ट्रेलर के बाहर वेट करना पड़ा था बारिश में। सो लिटिल थिंग्स लाइक दिस जो हमें ये साइड से पता नहीं होता, आई थिंक अब वो साइड से मुझे पता भी लग गया है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल, थैंक यू ऑल always for being by us and supporting us, and support Noor as well. कि फिल्म सबा इम्तियाज़ की किताब कराची और किलिंग पर आधारित है, तो व्हाट मेड यू कि आप ये सेटिंग चेंज करें पाकिस्तान से, कराची से मुंबई? और दूसरा सवाल, आपने 16 साल बाद एक फिल्म बनाई, स्निप शायद आपने बनाई थी, तो व्हाट इतना लंबा इंतजार क्यों?
Well, first of all, the book was really just the germ of an idea, the characters. We took those characters and we adapted it to Bombay, but it was really just the germ of an idea and the characters that were from the book. And then we spent a great deal of time taking it into Bombay and bringing it into this setting. So there's no link at all to Karachi or anything like that in the movie at all. It was just the germ of an idea. For your second question, yeah, it's been a long time. I have the same question to you. Why have you waited so long? I was practicing. I was directing commercials, ads for many years. Really enjoying myself. I was enjoying the time I was spending in advertising. I was waiting for something interesting for me to come back into the business with. And sometimes projects choose you. And I think that's what happened with this one. It came to me. It's about a city I love. The character was wonderful. Everything about it came together. The producers were incredible, the way they supported me and my vision. So overall, it was just a marriage of so many different things that just happened at the right time. So fate. Thank you. बहुत कम लोगों को पता है कि सुनील सिप्पी ने मेरा पहला ad Yes. direct किया था. My first ever commercial was directed by Sunil Sippi, and ever since then I was like, wow, he's such a good director. When will I get the chance to work with him again? And it's happened with Noor, and I'm so glad that it's for this film because it's just so special to, I think, all of us. एक सोप का ऐड था. मैं आपको लिंक भेज दूंगी. सोनाक्षी, मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि परसेप्शन जो है जर्नलिस्ट को लेकर चेंज हो गया है, पर हम अपना प्रोफेशन जो है, हम अपना काम करेंगे, हम कई तरह के सवाल करेंगे. क्या इसके बाद आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारी तरफ बदलेगा? I think ये Pandora's box है. अब ये खुल चुका है. बिल्कुल नहीं. If you refuse anybody an interview इसके बाद. नहीं, कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ चीजें शायद आपको अच्छी नहीं लगी. जी बिल्कुल. आई थिंक वो तो कोई भी पूछ सकता है ना. चलते हम लोग इतने फैन से भी मिलते हैं, वो भी कोई उटपटांग से सवाल कर ही देते हैं कभी कभार. तो आई थिंक इट्स प्रोफेशन की बात है. वो आपका जॉब है, आप कर रही हैं. मेरा जॉब है उसे कैसे जवाब देना या अवॉइड करना, वो मेरा प्रेरोगेटिव है. तो but definitely I've always respected y'all and I do even more after this film. तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ. ऑल्सो पहले अकीरा और अब नूर, एक पूरी फिल्म का भार अपने ऊपर जब आपके ऊपर होता है, तो क्या चीज़ें आसान होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं? आई डोंट नो ईजी या डिफ़िकल्ट क्या होता है, बट मतलब जिस तरह से आप what I felt even while promoting Akira भी नूर के साथ भी, I feel so liberated कि I don't have to depend on anybody else to carry this film. And honestly, the team that I have is such solid support for me. I don't need anybody else. And एक बार वो लत लग जाती है ना कि आप खुद कर सकते हैं. You're independent, you're strong, you're moving ahead with your team, with the people that you've worked with. I think it's just the best feeling in the world, and I'm really happy to be able to carry this film on my shoulders along with these people. And I have pretty strong shoulders. So and you have a fabulous aura and a positive attitude towards life. What motivates you to be what you are? I guess I've just always been like that. I always tend to see the positive side of things rather than the negative. It's just easier that way. I mean, you just. Yeah, it's just easier to be positive than negative, I feel. Yeah. Better than we were. Oh, good one. So, Sonakshi, since the film is based on a very popular Pakistani novel, I just wanted to know, will the film also have a release across the border? I mean, do you plan? That I think our producers will tell you. Yes, of course. We are releasing in Pakistan. Sure. Okay. Also, Sonakshi, towards the end of the trailer, you are heard saying that both Bombay and you deserve a second chance. And because I'm assuming you are low perhaps in the scene, has it ever happened with you both professionally or personally where you've gone through a low phase and you've really wanted another chance to prove yourself? I think everybody has those ups and downs in life, and I think if it's like that, that means you're living, right? And if it's like that, it means you're dead, flatline. So I think you have to have those ups and downs. You have to have those experiences that make you a better person. And I feel all of us, you, me, everyone around here has had those experiences. And yes, I have gone through my lows, but I have gone through lots of highs as well. And I prefer to move ahead rather than dwell on these things. And I've been taught to treat success and failure in the same way
and I think that just makes it even easier to move on. Yeah. That for the first time. So how was it being on a movie set? We all know you're a comedian. It was We've great. seen your People keep asking me, hero kaun hai? It's amazing. They ask me, bhaiya ye pakad lo, chai kahan hai? No, it was fantastic. I always watch movies from the outside, so I was very interested to see how a movie gets made. And it's fantastic. This obviously is not indicative how normal movies get made, because we made it on a very tight shift, very fast, very well-oiled machine. I really wish to see some drama and some cool stories I could tell my friends, like pata nahi ye sab hota hai, but none of that. Will your reviews change? Huh? Will your reviews change now? Will you be more like... I've warned him he cannot. Probably do not. this film. We see that there are a lot of like new faces we see in this film. Along with you, you're the lead. So do you think a big actor or a known actor would have made a difference or is missing from this film? Not at all. I think the What do you kind mean, of film, man? What do you the mean? kind of film. Yeah. That's what I'm feeling. Yeah. What do you mean, huh? I didn't mean to hurt you, Karan. No, not at all. I think that the kind of film that it is, the way that it's been written, the way the characters are, they needed real people. And I feel like I've never met Karan and Shibani before we did this film, and we're playing the best of friends. And I don't know, we just gelled so well, and each one of them fit into their characters so wonderfully, so beautifully. You're going to feel like, these people are real, who you're seeing up on screen. And I think each one of them has done such a fantastic job, of portraying these characters. I don't see anybody else who would have been able to do it as well as these guys. Woo! मीडिया की फिल्में विनोद जी, तो मीडिया में किस तरह इसको प्रमोट करेंगे? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपने अभी प्रोमो देख लिया, राइट? आपकी कहानी है, आप लोग प्रमोट करेंगे इसको। मेरा तो काम हो गया। I think सबसे ज़्यादा excitement इसी फिल्म के लिए रही है, because even when I used to go and promote my last two films, एक दो सवाल तो नूर के बारे में आ ही जाते थे, जो एक्साइटमेंट। विनोद जी, हर बार हर एक फिल्म का जो स्टोरी होती है वो तो हीरो होता ही है, लेकिन मार्केटिंग की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और मीडिया की फिल्म है, तो मतलब किस तरह कुछ अलग एंगल सोचा है आपने उसके लिए? अलग एंगल तो एक्चुअली हर फिल्म के लिए सोचना ही पड़ता है, पर आधा काम हमारा ये हो गया कि आप लोगों को सबको प्रोमो पसंद आ गया, जो थिएट्रिकल प्रोमो है, प्लस उसके साथ में जब कहानी आपकी है ना, तो काफ़ी चीज़ें तो आपके वहाँ से आएंगी, द आइडियाज़ आप ही लोग हमको देंगे, यार हम ये करें तो। अब जैसे हमने 2-4 चीज़ें बहुत ही जैसे कहते हैं कि हाई पॉइंट जो कैंपेन में आता है वो हमने सोच के रखी है, बट अगर मैं अभी बता दूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन लेंथ विद सोनाक्षी एंड द एंटायर टीम, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म टू बिलीव दैट आपकी कहानी में इतना इंटरेस्ट कैसे लेके इन्होंने पिक्चर बना दी। एंड जब फिल्म अगर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, तब हम एक बहुत सही बड़ी पार्टी करेंगे, जिसमें क्योंकि फिल्म आपकी है तो आप लोग को सराहा जाएगा। इंटरव्यूज भी मिलेंगे उनको। होली का त्योहार आ रहा है, होली किस तरह मनाती हैं आप, और होली की शुभकामनाएं दे दें दर्शकों। होली एक्चुअली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, बट पिछले कुछ सालों से मुझे मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं हमेशा शूट के बीच रही हूँ, और जब मैं खेलती हूँ होली तो बहुत ही जंगली की तरह खेलती हूँ, और फुल कलर वाला लग जाता है, तो वो शूट में नहीं चलता। सो आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो आई एम गोना हैव टू स्किप इट, क्योंकि मैं इत्तेफाक के लिए शूट कर रही हूँ, बट आई लव होली एज अ फेस्टिवल, एंड आई लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। बॉलीवुड में पहले ऐसा होता था कि जो मेल एक्टर्स हैं वो पूरा फुल फ्लेज सारी फिल्म ले जाते थे, और लड़कियां जो होती थी वो सेकंड लीड में होती थी, लेकिन अब ऐसी फिल्में बन रही हैं जो अकेले लड़कियां लीड कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक नया रेवोल्यूशन जो है वो बॉलीवुड में आया है? आई थिंक अब ये चौंकने वाली बात भी नहीं है, और आई थिंक ऐसे सवालों का भी जल्दी थोड़ा घटना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम हर फिल्म जो करें, आप तो नहीं पूछ सकते ना कि आपके फिल्म में हीरो नहीं है तो आप कैसे प्रमोट करेंगे। अब हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम बना रहे हैं फिल्में। नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट कि अकेले एक फीमेल एक्टर होकर भी मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज लड़कियां नहीं कर सकती? तो फिल्म बनाना और प्रमोट करना क्या चीज़ है? हम वो भी करेंगे, एंड और बहुत सी चीज़ें करेंगे। एंड आई फील दैट टुडे there are such wonderful characters being written, there are such wonderful films being made with keeping female protagonists in mind, and ये अभी एक normal सी चीज़ हो गई है, I feel, and it's great that the industry has taken a step in that direction, and it's giving us so many beautiful roles to portray, and I thank producers like them who make films like that, and give us an opportunity to portray roles that people can only dream of playing on screen. मेरा सवाल आपसे है कि ट्रेलर में देखा शायद आप बॉस बने हैं सोनाक्षी के, तो हाँ, तो जरा उसके बारे में बताएं, किस तरीके की तैयारियां नहीं आपकी?
मेरी 2 हफ्ते पहले सुनील और मैं कुछ मेरी डबिंग क्लीन कर रहे थे स्टूडियो में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको पिक्चर में डायरेक्ट ही नहीं किया। तो मैंने कहा आप शायद वो हफ्ता भूल रहे हैं शूटिंग से पहले जब 6-6 घंटे आपने मुझे स्क्रिप्ट के साथ पेला था। तो मैंने इनको याद दिलाया कि वो जो 6 घंटे 7 दिन हमने लगातार काम किया, उसकी ही वजह से इन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना। तो फिर मैंने इनसे कहा कि जो भी आपने मुझे वहां कहा था मैंने फिल्म में वही किया है, तो ये मत समझिएगा कि आपने डायरेक्ट नहीं किया, आप ही ने डायरेक्ट किया मुझे, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। भूषण जी, एक दौर आपने लाया सिंगल्स का, काफ़ी इंडस्ट्री में एक चेंज था, फिर उसके बाद कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स का एक दौर है। आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस आप एज अ प्रोड्यूसर लेके आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में? और सी दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जब तक एक दौर आता है जिस तरीके की फिल्में लोग कभी एक्शन पसंद करते हैं, कभी कॉमेडी पसंद करते हैं, अभी जैसे जैसे दौर चलेगा, जैसे जैसे सब दर्शकों को पिक्चरें पसंद आएंगी, उस तरीके की पिक्चरों को हम बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अभी ये रियल बेस्ड सिनेमा, पीपल वांट्स टू कनेक्ट विद इट, तो उस तरीके की फिल्में चल रही हैं, तो वी आर टुवर्ड्स दैट फिल्म। बट यस, वी आर ब्लेंडिंग दैट विद म्यूजिक, ताकि एक एंटरटेनमेंट रियलिटी बेस्ड सिनेमा के साथ आपको एक एंटरटेनमेंट मिले म्यूजिक के जरिए। जी, फिल्म में गुलाबी आंखें हैं एंड आई थिंक जिस तरह से इसे रिक्रिएट किया गया है, मुझे इतना मज़ा आया वो सॉन्ग को परफॉर्म करना, जिस तरह से शूट किया गया है, जिस तरह से मिक्स किया गया है, एक बहुत ही यूथफुल फील लाई गई है उस गाने में एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ दिस सॉन्ग। आई कांट वेट कब ये गाना रिलीज हो और सब उस पर नाचे। नहीं, मैं ये नहीं गाने वाली हूँ, मैं कुछ और गाने वाली हूँ। ओके, तो गा दो ना 2 लाइंस। सरप्राइज है। नहीं। सो गुलाबी आंखें। All right, thank you so much.